Good morning, student. I am Rajendra Singh Mori, your maths teacher from the Gyanmanjari Vidyapith Mahuva. Again, welcome back in this online session of class 6, and this is your daily review. Whatever we discussed into the earlier session, just we check it out that which things you remembered or which things you have to forgotten. That things we have to just get it the review. So let us move on it. First of all, we have to study at last the conversion of units. So everybody knows that how will you convert a basic unit to a bigger unit. That time again you just recall that how can you convert a basic unit to a bigger unit. That's why we have to use, whenever we have the smaller unit to a larger unit, we divide by 10, and that time we are using this particular table. So just recall it again, how to convert this basic unit into the bigger unit. यदि हमें स्मॉलर में से लार्जर में जाना है तो ये पर्टिकुलर यूनिट हम यूज करते हैं, और सभी को जितने भी प्लेसेस है उसको हम 10 से डिवाइड करते थे. सेकंड थिंग, इसमें हमने देखा था हाउ विल यू कन्वर्ट ए बेसिक यूनिट टू अ स्मॉलर यूनिट. तो दैट टाइम वी आर ऑल्सो यूजिंग some specific table like that. Larger unit to a smaller unit, that time we have to multiply it by each place by 10. So this is the two things that we discussed in earlier session, so you have to recall both things because it's very important. So let us move. After taking this, just whatever we studied at the last lecture, that is conversion of unit, so both things you have to remember well. Now let us move on to the next point. So let us move on to the word problem. If we have to take the smaller questions in it, but if we have the word problems, then how can we solve it? So let us move up. Let us check some of the word problems that is available on your SB6 and SB7 page number. So both page number you have to study it for the understandings about the conversion of unit, basic unit to higher unit, or we can say that the smaller to bigger or bigger to smaller. So let us move on that word problem. First of all, how can we solve this word problem? We all know that now the four category we have. First, we should understand the problem first. Then we identify the operation. Then third thing is write the statement, and fourth one is solve the problem. So first understand, second identify, then third write, and fourth one is the solving this particular problem. So let us use some addition word problem is there. First, the population of Sundaran Nagar, that is was 2,35,471 in 1991. So this questions first we have to understood. In 2001, it was found to have increased by 72,958. What was the population of the city in 2001? So this we have this kinds of the one word problem. तो हमें याद रखना है कि हमें चार कैटेगरी में उसको सॉल्व करना है. पहली कैटेगरी, इस वर्ड प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड्स करना है. दूसरा, आइडेंटिफाई करना है कौन सा ऑपरेशन इसमें यूज होगा. थर्ड, हमें वो स्टेटमेंट को राइट करना है. एंड फोर्थ वन, फाइनली वी हैव टू सॉल्व दिस. सो दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ द थिंग्स. फर्स्ट वी हैव टू मेंटेन. Among them, first one is the understand. So first one starts, read and explain it within your friends or your parents or whatever within you. And second one, write what is given and ask. तो इसमें आपको यही करना है अंडरस्टैंड में कि इसमें क्या गिवन है और क्या उस क्वेश्चन का हमें करना है, मतलब विच थिंग्स इज आस्क्ड, हमें क्या कहा गया है कि इस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है. सो टू थिंग्स इज रिक्वायर्ड फॉर द अंडरस्टैंडिंग कैटेगरी.
First one is the given and second one is the asked. So let us start from first category. First one, which things is given? Here given that population of Sundaran Nagar, that is given here 2,35,471, and it will be increased by 72,958. That is a given part. Is it clear? And second thing, which thing is asked from given? ये जो given part है उससे आपको क्या find करना है? That we write into the asked part. That is what was the population of the city in 2001. So two things are clear here, given and asked in first category, understand. Now second one is identify the arithmetic operation. What is the operations here? So obviously we have to find out the operations that is related with the identify. So obviously that is addition. And now if we have to use addition, then why we choose only the addition? Why we are not choosing the subtraction, multiplication and division? Because of, to find the increased population, we add the old population to the amount it increased by. मतलब हमें ऐसा करना है कि हमें कितना पॉपुलेशन बढ़ा है वो ओल्ड पॉपुलेशन में हमें ऐड करना पड़ेगा. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द एडिशन. तो सेकंड आइडेंटिफाई मतलब ऑपरेशन हमने फाइंड कर लिया. थर्ड थिंग, हाउ टू राइट दिस स्टेटमेंट्स. जो हमने ऑपरेशन चूज किया तो उसके रिलेटेड हम कौन सा स्टेटमेंट्स लिखेंगे. सो दैट मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स हियर वी हैव टू राइट. स्टेटमेंट ऑब्वियसली 2,35,471 प्लस 72,958 दोनों का एडिशन करेंगे हम. Then expressing a situation using numbers and operations both are to be cleared into the right category. So third one is over now. Now fourth one, solve. So just we have to write down in our place value table. So both things, first we have to write ones, tens, 100, 1000, 10,000 and lakh. So we have to write first 2,35,470 1 by 1 2 3 ऐसे हम लिखेंगे. फिर दूसरी लाइन में हम लिखेंगे यही प्लेस वैल्यू टेबल में ही हम दूसरी 72,958 लिखेंगे एज इट इज. जैसे ही हो जाएगा दोनों के बीच में एडिशन प्लस है, सो दोनों का हम प्लस कर देंगे. दैट इज वेरी सिंपल. So that kind of the solution of the first. Now finally the solutions is given here, that is the solving. For that we have to get the answer that the total population, or we can say that what was the population of the city in 2001, that is 3,08,429. So that is the solution of these four categories we have solved already. ये पूरे वर्ड प्रॉब्लम को ऐसे ही आपको सॉल्व करना है. इज इट क्लियर? नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड वन. दिस इज द सेकंड वन क्वेश्चन हियर. इन द स्टेट द नंबर ऑफ बाइसिकल्स सोल्ड इन 2002 to 2003 was 7,43,000. In 2003-2004 the number of bicycles sold was 8,100,000. In which year were more bicycles sold? How many more were sold is there? तो अभी आपको पहले अंडरस्टैंड्स में गिवन और आस्क्ड बताना है. गिवन क्या है? नंबर ऑफ बाइसिकल सोल्ड इन द स्टेट 2002 to 2003 जिसमें आपको 7,43,000 है, और नंबर ऑफ बाइसिकल सोल्ड इन द स्टेट इन 2003-2004 में आपको 8,100,000 बाइसिकल का सोल्ड मतलब सेलिंग हुआ है. तो ये दोनों का सेलिंग आपको पता है, तो आपको फाइंड क्या करना है. दैट इज अंडरस्टैंड्स इनटू द आस्क इन विच ईयर वेयर मोर बाइसिकल सोल्ड. तो आपको बताना है कि कौन से ईयर में ज़्यादा बाइसिकल सेल हुई और हाउ मेनी मोर वेयर सोल्ड और कितनी ज़्यादा सेलिंग हुई. ये दो चीज़
आपको बतानी, दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट इनटू द आस्क्ड. So it's very simple. Now compare the two numbers and subtract the smaller number from the larger number. ये दोनों चीज आप कर सकते हो दोनों दोनों क्वेश्चन में. आप देख सकते हो कि पहला जो पार्ट है क्वेश्चन का, इसके लिए आपको दो नंबर को कंपेयर करना पड़ेगा. कंपेयर करने के बाद जो स्मॉलर नंबर है वो लार्जर नंबर में से आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. ये दो चीज का आपको एब्रिविएशंस यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. नेक्स्ट वन कंपेयर करेंगे तो विच वन इज ग्रेटर, ऑब्वियसली 8 लाख 100 इज द बिगर देन द 7,43,000. सब्ट्रैक्ट फ्रॉम लार्जर नंबर टू स्मॉलर, मतलब लार्जर जो है उसमें से हम स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करेंगे. ये चीज़ है, बड़ी इजी है, दैट्स व्हाई वी कैन डायरेक्टली मूव ऑन इट. जैसे आपको पता चल गया कि स्टेटमेंट्स है वो ऐसे ही लिखा जा सकता है, देन वी हैव टू डायरेक्टली राइट इनटू द प्लेस वैल्यू टेबल. इज इट क्लियर? तो आपके पास बचा 57,100. सो जस्ट वी हैव टू राइट इनटू द आंसर ऑफ इट. तो 57,100 more bicycles were sold in 2003-2004 then 2002 and 2003. 2002 2003 के कंपैरिजन पे 2003-2004 में 57,100 मोर बाइसिकल वर सोल्ड. इज इट क्लियर? तो ये हुआ आपका सेकंड बिगेस्ट या वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन. नाउ third one is considered here and that you have to cover in your homework. सपोज ये मान लो कि दो क्वेश्चन अभी आपने किए, उसके ऊपर से एक क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में करना है. द टाउन न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड एवरी डे, वन कॉपी हैज बीन has 12 pages. Every day 11,980 copies are printed. How many total pages are printed every day? तो ये चीज़ आपको होमवर्क में सॉल्व करना है. हो जाएगा ना? इट्स वेरी इजी. सो लेट अस मूव ऑन टू द अनदर पॉइंट्स. नाउ द सेकंड वन ऑल्सो बी डन इनटू टुडेज होमवर्क. ये भी आपको सेकंड होमवर्क में आपको कंप्लीट करना है. मतलब पहले जो अभी मैंने स्क्रीन पे बताया वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने की ट्राई करनी है आज आपके होमवर्क में. ऐसा लगे कि नहीं हो रहा है, देन आई विल प्रोवाइड यू टू द सॉल्यूशन, बट जस्ट यू हैव टू ट्राइड एट योर होम. आइदर इट कंप्लीट्स और नॉट, जस्ट इन्फॉर्म मी. if you have not completed these things, then you can also say like, sir, we are not able to handle these kinds of the thing. Okay, but otherwise it's very easy, so you have to try. Now थोड़े सॉल्यूशन एनसीईआरटी क्वेश्चंस के भी हैं. सो इट्स यू कैन ऑल्सो राइट अंडर द हेडिंग. जैसे मैंने पहले ही बताया है कि थोड़े एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन यहाँ पे दिए गए हैं जो आपने आगे किए हैं या नहीं किए हैं, जो भी है. यदि कुछ भी नहीं लिखा है एनसीईआरटी क्वेश्चंस के बारे में, तो जस्ट फ्रॉम यहाँ से जो भी क्वेश्चंस आपको दिखते हैं वो सभी क्वेश्चंस यू हैव टू राइट डाउन एज ए सॉल्यूशन. इज इट क्लियर? सो you must be write this all NCERT question in your fair book. आपको ये सभी चीज़ fair book में ही मेंशन करनी है, ये याद रखना. Okay, so you have to write in all the question into fair book. So let us move on it. First, like that. First, fill in the blanks like NCERT exercise 1.1 पेज नंबर 12 का क्वेश्चन है. जिस तरह से यहाँ पे लिखा है वैसे ही आपको मेंशन करना है. 1 लाख इज इक्वल टू 10,000. हम उसको कैसे लिख सकते हैं, वो अपना प्लेस वैल्यू टेबल भी लिखना है और ब्लैंक भी फिलअप करनी है. ऐसे ही सेकंड वन भी है, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10,100,000. सो ऐसे ही आपको दोनों चीज़ मेंशन करनी है. तो ये पूरी तरह से अच्छी तरह से आपको स्क्रीन में दिखाई देता है. सो यू कैन ऑल्सो डायरेक्टली राइट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका ए एंड बी है. ओके, नाउ सी एंड डी. 1 crore इज इक्वल टू 10 लाख.
how to represent it into the Indian system, that we have to mention. And 1 crore is equal to 10 million, that is also be using Indian system as well as international system. तो जिस तरह से आपको दिखाई देता है वैसे ही आपको मेंशन करना है. Just it is the question number 1C and D. Now fill in the blanks that is covered with the question number E, that is 1 million is equal to 10 lakh. तो टोटल क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 के 5 क्वेश्चन हुए, ए बी सी डी एंड ई. ये चारों पांचों पांच क्वेश्चन आपको अपनी फेयर बुक में ही मेंशन कर देना है. इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं. If the speed is maintaining, not maintaining, then you just pause the video and you have to write. Okay. So let us move on to the next one exercise, that is 1.1 का question number 2. Place commas correctly and write the numerals. ऐसे करके आपको क्वेश्चन दिया गया है. You just write down this. That is also be available for page number 12 of NCERT book, but this is given with the solution, so you can also write down in your fair book. So question number 2 का A and B ये दोनों क्वेश्चंस आपको मेंशन करना है. And next one we are consider the question number 2 का C and D. So this is the question number C and this is the question number D. जो चीज आपको मेंशन किए, ईच एंड एवरीथिंग लुक्स लाइक दैट वे यू हैव टू रिप्रेजेंट. ओके. सो दिस इज द सी एंड डी एंड देन लास्ट वन इज द ई. सो टोटल क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की ए बी सी डी ई, वैसे क्वेश्चन नंबर 2 ए बी सी डी ई. टोटल 10 क्वेश्चंस आपको आज फेयर बुक में लिखना है और वही होमवर्क में सेंड करना है. इज इट क्लियर? फिर से मैं बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 पेज नंबर 12 के क्वेश्चन नंबर 1 ए बी सी डी ई एंड क्वेश्चन नंबर 2 के ए बी सी डी ई. Total 5 plus 5 यानी 10 question you have to write in your fair book and that photographs is sent as a homework. So I hope that everybody understood well how to write this everything in your fair book as well as which things is into the homework. If you having any kinds of the problem, then you just tell me. If you having any kinds of the doubt, then you can ask me. I hope everyone just completed within the few times. Thank you very much for being with us. We will meet very soon into the next lecture. Thank you.